वन्दे मातरम् 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 Of class 9 Tyrants, hereby welcome all of you on this glorious day as we gather here to celebrate the spirit of freedom. Now we feel honored to welcome our chief guest, Lieutenant Colonel Sarah Mithai, along with our respected principal, Reverend Father David Paul, with four pilots, Davina Chaudhary, Gandhi Parekh, Vidhi Jangir, and Harshika Sandhu, escorting our honorable chief guest with full of enthusiasm. A professional qualification for military hospital, Jammu, in basic and advanced cardiac life support. She served in various places across India in hospitals of the Army, the Air Force and in submarine blast, Navy Hospital, Mumbai, food poisoning outbreak, military hospital, Bareilly. Now I request our respected principal, Father Gilbert, to present a bouquet to our honorable chief guest. And as per our tradition, I request Sister Flory to present a supper. Introduce the four distinctive houses, namely red, blue, yellow, and Here at your side is the red house, dressed in red, the color of ruby, symbolizing love, courage, passion, and energy. It signifies the pioneering spirit and leadership qualities, promoting ambition and determination. Now you are witnessing magnificent yellow house, the color of topaz. It is the color of sunshine. A day start and ends with the color yellow. It represents friendship, laughter, hope, and love for learning. it is the color of empathy and resilience. It symbolizes truth, equality, honesty, and respect.
holding the house flag. Now here comes Blue House, led by Goal Captain Yashvi Jangir, followed by Goal Vice Captain Khushbu Chaudhary, holding house flag. Now, at your side is Yellow House, led by girl captain Jia, followed by girl vice captain Sonia Vishnoi, holding the house flag. Here comes Green House, led by Goal Captain Disha Jariwala, followed by Goal Vice Captain Manali Bhatia, holding house flag. The drum beat the band strikes up the highest voice, issues a command. The finger of arms is inspiring about the march power, the sense of dignity and pride the cadets repudiate. सुरेश पंगा गलत जगह खड़ा हुआ है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। देंगे बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे, नीलाम न होने देंगे, नीलाम न होने देंगे। सुप्रभात परम आदरणीय अतिथि महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य, श्रद्धेय गुरुजन एवं यहाँ उपस्थित मेरे समस्त मित्रगण, मैं कुलदीप बिश्नोई आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम यहाँ पर अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। These were the words said by our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. A very good morning to Honorable Chief Guest, respected Principal, Vice Principal, sisters, teachers and all my dear friends. I extend a warm welcome to all gathered here to celebrate this glorious celebration. As we celebrate 77 years of independence and incredible India, I extend my heart but treated as untouchables. India is an independent nation now. As the preamble of Indian Constitution states itself as a sovereign, secular and democratic country, it is our responsibility that we hold the pillars of virtues
in India as a youth. For years, our courageous heroes fought valiantly to ensure that future generations might live in freedom and dignity. For your country. Wow, what a wonderful thought. Give him a big round of applause. Let's have a change. Let's come back to reality. Let's come back to the theater of life. Actually, life. बस यार ड्यूटी खत्म लगा कैरम कैरम लगा कैरम चलो आज नहीं हारने वाला मैं और अगर हार गया तो पहाड़ से मिठाई मंगवानी पड़ेगी ठीक है जैसे काली की सफेद काली फिर ले सुना तूने तेरे घोड़े ने तो छक्का मार दिया हम हार जाएंगे यार पिछले मैच में अफरीदी ने जब सेंचुरी मारी थी तब हम रोए थे क्या हाँ अब तुम मुझसे हो पिछली बार वर्ल्ड कप नहीं खेला था बेटा तुम दोनों फिर से शुरू हो गए गेम है गेम की तरह खेलो रिलैक्स चिट्ठी आ गई सर चिट्ठी आई है मेरा हाँ सर बड़े दिनों के बाद घर से कोई पार्सल आया है किसकी चिट्ठी है भाई चिट्ठी तो माँ की है तो हमें भी पढ़ के सुना ठीक है लिखती है मेरे प्यारे लड्डू 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 माँ बिना हमारे बारे में कुछ लिखा भी है नहीं पढ़ता हूँ तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती तू कब आएगा तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे अकेले मत करना उनको भी देना और बस यार आगे पढ़ नहीं पाऊंगा तुम लोग मिठाई खाओ ना अरे आओ आओ मिठाई खाओ ले लड्डू खा लड्डू तुझे क्या लगा सारे लड्डू खत्म हो गए तूने खा लड्डू छक्के खाए यार अभिषेक भाईजान अगर तुम शहीद हो गए तो मुझे तुम्हारी मिठाई बहुत याद आएगी दोस्ती बहुत निभानी यार अफवाज निभाने की बात है तो अलविदा मेरे दोस्त अलविदा जंग तो चंद राज
आगाज होती है जिंदगी बरसों तलक रोती है। तो यही है वो जगह जहाँ पे मेरा बेटा शहीद हुआ। फरीदा, आशा, मैडम आप वहाँ नहीं जा सकते, हमारी सरहद यहीं तक है। बेटा, माँ के लिए कोई सरहद नहीं होती, वैसे ही जैसे धरती के लिए कोई देश नहीं होता। आओ बहन। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर इस तरह नहीं। अभिषेक ये चाहता था कि इसकी सबसे प्यारी चीज उसके सबसे अच्छे दोस्त को मिले। हमारे बच्चों की ये दोस्ती इन सरहदों से परे है, ये काबिल तारीफ है। उसका भी यही वादा था। ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सबके लिए ये धरती बनाई थी, और मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बनाई थी। ऊपर नीला आसमान, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले हैं और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंतर है नामों में? हम क्यों बटे हैं मुल्कों में? जय देश कहें या जय जगत? जय जगत, जय जगत। सभ्यता संस्कृति का अनुपम खजाना यहाँ मिलता है। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश हमारा है। भारत है इसका नाम, भारत है इसका नाम, ये सब देशों में निराला है। नाशीश कभी झुके इसका, इतिहास के इसका मान रखें। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें, हर पल इसका ध्यान रखें। एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्माण करें, रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसे काम करें, मिलकर ऐसे काम करें। वीर शहीदों का ये भारत, वीर शहीदों का ये भारत, क्यों ना इसका अभिमान करें। आज़ादी है उनकी देन, उन बलिदानों का मान रखें, उन बलिदानों का मान रखें। सुंदर संस्कृति जिसका गहना, अतिथि है भगवान जहाँ,
ऐसा अद्भुत देश है भारत, इसके जैसी शान कहाँ, इसके जैसी शान कहाँ। हर जाति संप्रदाय में शांति और सद्भाव रहे, छोड़ बैर की बातें, हर धर्म का सम्मान करें, नव भारत का निर्माण करें। रामकृष्ण, रानी पद्मिनी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सुभाष चंद्र बोस, ये महापुरुष के विचार कहीं न कहीं आपके और मेरे अंदर सुप्त अवस्था में छिपे हुए हैं। मैं कोमल इन सुप्त आत्माओं को इस कविता के माध्यम से आहूत कर रही हूँ, जिससे आप सब में मौजूद राम, महाराणा प्रताप, काली या शिवाजी जैसे लोग पुनः जागृत होकर इस संसार को, इस भूमि को पुनः स्वर्ग में तब्दील करें। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीर जवानों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भैरी बज रही, रण की भैरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंगन पहने वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव दुष्ट शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। कन्वाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जगे, राजगुरु के प्राण जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। झर झर नदियाँ सर सर चलती, पावन शुक्ल तेरे मौसम वन्दे मातरं। जंगल जंगल डाली डाली, चांदनी पर से सपनों वाली, तेरे चरणों का चुंबन ले हम, शीतल मुस्कान तेरा करम वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। हे जननी माँ भारती, तू नहीं साहस हारती, जग करता तेरी आरती, ऐसी तेरी भक्ति वो तेरे रूप साक्षात है, तेरे करोड़ों साथ है, तेरे करोड़ों हाथ है, जिनमें तेरी शक्ति है, सारे ही सागरों के तट पर है तेरी प्रशंसा। तेरा हर हर क्षेत्र है प्रशंसा। ऐसे कलंक सुनाया गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा।
respected Grandfather David, Principal, St. Paul's School, dear Sister Flori, dear Father Gilbert, all dear proud teachers, faculty, all of you, all the staff members, all who are here at the background, and all people who are working behind, and my dear students. I can see some parents too, dear parents, and my dear students. It is indeed my proud privilege. Father David had invited me for this Independence Day celebration, and with my whole heart I would like to thank Father David for this opportunity to witness such wonderful, lively and heartwarming performance by young children and future of my country. It makes me more proud than ever. And I'm so happy and delighted to see all of you. I just wanted to have a view of all of you, so I just came ahead to speak. I would like to say that there were many programs and I was very happy with the parade too. I am sorry I couldn't come in uniform due to some protocol issues. But I was very happy to see the synchrony, the drill, and I would like to congratulate the teachers who trained them. And all the programs, I would like to congratulate the anchors, all the students who gave speeches, the poem, the skit, wonderful skit, wonderful poems, wonderful speeches. The dance was really wonderful, the song, and all ages of children in all the performances. I was very happy and delighted to see that the future of our country is so bright, so colorful, and so talented. My message to all children would be that you would keep this enthusiasm alive as long as you belong here and in the world. And to brighten the name of our country, wherever you are placed all over the world. I would also like to remember myself. It only feels like yesterday when I am standing on the other side of the ground doing a program or sitting in the audience, and my teachers and my principal is standing on the stage and they give speeches and they encourage us and motivate us on Independence Day. So honestly speaking, they are the ones who have inculcated a feeling of unity, patriotism and secularism in me. Before I could even get into the armed forces, me and my husband, we both are serving officers. I am in the military nursing services and my husband is also in the fighting arms, the regiment of artillery. But definitely that feeling of patriotism is definitely inculcated in the school. So I would like to tell my young friends that India, independent India, we are born 77 years of independence, right? So we are born in independent India, most of us, until unless you are 80 years or so on. So we are born and we are so lucky to be born in independent India. And I would fall short of words and praises and fall short if I mention only a few freedom fighters. All our freedom fighters shed their blood, strive till the last moment. And we are proud of our nation and our independent country. But I would also like to remind and remember that our country is also the hard work of the poor people who have strived
to bring our country forward. Being in the army myself, I would like to say, not only the soldiers, but also all the people who are working, the farmers, the tradesmen, the people in the police, the people in the medical field, the people with technology, the inventors, the industries, the big and small, and most importantly, I know again I am falling short of words because there are many people, all the people who work to keep the country clean also. And most importantly, I would like to say the teachers whom I can see all gathered here. For me, my teachers were the most important soldiers, I would say. As I mentioned, that they have inculcated a sense of freedom, independence, secularism, unity, patriotism in me. So I would like to first and foremost place my teachers who have built my foundation. So I give the message to all you students that tomorrow when you go away from the school, we have this red, blue, yellow, green houses, but they all had a unity in parade. Different and yet same. So we will stand united together and make our country proud and our alma mater proud. And tomorrow when Father David will look back at you after 20-30 years, he will be so proud of you that each of my students are doing well in their field wherever they are. So I am like very hopeful and very confident that such talent and such bright future is the future of my country, India, and I'm very proud to be here, to have you all here in front of me and very privileged to speak. So I'm hoping that each and every one does my country proud. Thank you very much. Dhanyavad. Jai Hind. Jai Bharat. Vande Mataram. Thank you. Please give a big round of applause. A grateful heart will give you a touch of refinement that can come in no other way. On this glorious day of 77th Independence Day, I feel immensely proud to have an opportunity to propose a vote of thanks on behalf of the Pauline family. I am proud to be a citizen of India and feel responsible to celebrate such glorious day. Honorable Chief Guest, respected Principal Reverend Father David John, sisters, teachers, non-teaching staffs, and my dear students, a very pleasant good morning and a happy Independence Day to you all. I invite our respected principal, Reverend Father David John, the driving force behind our school success, to the stage for sharing. Lieutenant Colonel Sarah Mathai, Father Gilbert, sisters, members of the staff, members of non-teaching staff, supporting staff, and my dearest students. First of all, let me wish you all a happy Independence Day. And I'm really proud to be a citizen of this nation. The motto of our nation is unity in diversity. We belong to different cultures, customs, traditions, languages, places. But we belong to one nation, one motherland, that is India. And we know that our nation has made tremendous progress in every field, be it in science and technology, be it in the medical field. It is true that we have received independence from the British, but still there are some social evils that prevent us from whichever places you are, and in whichever field you are, remember, you have to be and make our nation proud with your contribution.
Now it's true that it's your time to study. So therefore, put your full effort. Congratulations to you. And my dear students, you have really danced well, sang well, performed skit well. Parade was really good. And you were really looking really good, means really fantastic. It was really good. And the uniformity, everything, and PTAs, I know that they have been